मरकजी बजट में तेलंगाना को जीरो फंड्स। बीआरएस एमएलसी के कविता का बयान। अपोजिशन बीआरएस पार्टी के एमएलसी के कविता ने कहा कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी के 8 एमपीज मुंतखब होने के बावजूद मरकजी बजट में तेलंगाना को जीरो फंड मिले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर अपने पोस्ट में के कविता ने पूछा कि ये बजट है या बजट नज़रअंदाज नेगलेक्ट है। इन्होंने कहा कि 8 बीजेपी के एमपीज प्लस 8 कांग्रेस के एमपीज तेलंगाना जीरो। बीआरएस सरबराह व साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर की दुख्तर कविता ने ये बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। Britishers never taxed our handloom industry. Modi government has taxed handloom industry, but there is no relief for them as well. Unfortunately, there is no mention of census. Very less budget is given to census. So whenever people talk tall about Bharatiya Janata Party, talks tall about reform, transform, etc., they should at least know how many people are there in this nation. Census should be immediately taken up. It is a shame to the nation that in the last 10 years of 2 terms of this Bharatiya Janata Party government, census was never taken up in this country. Even after a severe pandemic like COVID, there are no steps taken to find out how many people in this country are there, to provide them with ample health facilities, health insurance, etc. It is really unfortunate. And when I talk about my state, there is simply nothing to talk about. 8 MPs of BJP from here and 8 MPs of Congress